Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a doped semiconductor has impurity levels 20 meV below the conduction band. Is the material N-type or P-type? What is the wavelength of light so that the electron of impurity level is just able to jump into conduction band? Use H is equals to 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second and C is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि हमारे पास एक डोप सेमीकंडक्टर है, मतलब उसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड करी हुई है, ठीक है। और उसकी जो इम्प्योरिटी लेवल है दैट इज 20 MeV बिलो द कंडक्शन बैंड। तो मतलब हमारा जो इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो एनर्जी लेवल हो जाएगा दैट इज 20 MeV बिलो द कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो जो गैप होगा दैट वुड बी व्हाट, तो डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड impurity level is 0 to 20 MeV। ओके, तो बेसिकली क्या है कि लेट्स से दिस इज आवर कंडक्शन बैंड एंड दिस इज आवर impurity लेवल, ठीक है। दिस इज, लेट्स कॉल इट C band and this is the impurity level। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप है दैट इज 20 MeV, राइट। अब यहाँ पे काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज हैं, राइट। और क्या बोल रहे हैं कि इज द मटेरियल एन टाइप और पी टाइप, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट सो दैट द इलेक्ट्रॉन ऑफ इम्प्योरिटी लेवल इज जस्ट एबल टू जंप इनटू कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज हैं दोज विल बी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड व्हेन लाइट हिट्स दे विल जंप टू कंडक्शन बैंड। व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट wavelength will hit, it will jump to conduction band. Therefore, now the key concepts here are, first is that in an n-type semiconductor, electrons are the major charge carriers or are in large amount, let's say, are in large amount than holes। तो बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, इन द कंडक्शन बैंड विद रिस्पेक्ट टू हॉल्स इन द इम्प्योरिटी लेवल और बैलेंस बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर रहा है कंडक्शन बैंड के अंदर, देयरफॉर यहाँ पे जो ये हमारा सेमीकंडक्टर होगा दैट विल बी द एन टाइप सेमीकंडक्टर। बट बिफोर दैट हमारा सेकंड की कंसेप्ट है दैट इज, if there is difference between if there is a difference in energy levels, then the photon energy required to jump the electron is equal to the band gap। तो बेसिकली यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स के बीच कोई डिफरेंस है और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो लाइट है वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करे हायर लेवल में, therefore जो एनर्जी ऑफ फोटोन होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल्स टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द बैंड गैप्स। ओके, तो एनर्जी फोटोन should equals to energy band gap, right? Which implies now energy of photon is what? Energy of photon is given as E is equals to h nu,
and nu is c by lambda, so E is equals to hc by lambda, right? और ये किसके इक्वल होना चाहिए? Let me write it as EP. Okay, so EP is equals to hc by lambda, or this should be equals to energy difference or energy band gap, right? तो यहाँ हमारा बैंड गैप कितना है? E बैंड गैप इज इक्वल्स टू 20 MeV, करेक्ट? अब लेकिन हमारे जो H और C वगैरह दे रखे हैं वो जूल सेकंड और मीटर सेकंड में दे रखे हैं, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस एनर्जी गैप इनटू जूल्स, ठीक है? सो दिस विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू, अब 1 EV is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 volts, right? And this is MEV, which is मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power minus 3 से भी, okay? So this will be equals to, this is equals to 32 into 10 to the power minus 21 joules, ठीक है? So this is our, sorry, 10 to the power minus 22 joules. So this will be our energy gap in joules, correct? So now ये जो EP है और E band gap है, those should be equals, so HCO और lambda is equals to 32 into 10 to the power minus 22, right? Which implies lambda is equals to 32 into 10 to the power minus 22 divided by HC, which is equals to 32 into 10 to the power minus 22 divided by H is 6.63 into 10 to the power minus 34 times 3 into 10 to the power 8, right? So if we solve this, we will get 32 into 10 to the power minus 22 divided by 6.63 into 3 into 10 to the power minus 26, right? So therefore, in further solving it, we will get lambda light is equals to 6.22 into 10 to the power minus 5 meter, okay? And also the semiconductor is N type, right? So this is our final answer. I hope you understand it well. Best of luck.